Hello students, welcome to the industrial management subject, lesson number 6. Let us discuss the functions of the management. So already we have discussed about the management, manage the people to get the work done properly. So and what are the functions of that? So we'll discuss one by one. The first one is a forecasting. It is concerned with the estimation of qualities for future production, the sales forecast, cost, finance problems, capital expenditure, profit or loss alternatives available and planning started. See that forecasting, what does it mean actually? आप लोग आगे का देखना चाहिए, आगे का प्लान करना चाहिए, क्या हो सकता है उसके लिए प्रॉपरली प्लानिंग करना चाहिए. सी एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज़ फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन. सो आज मैं 10 कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं कितना कर सकता हूँ, कितना सेल हो सकता है, उसका कॉस्ट क्या हो सकता है, फाइनेंस का क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, उसका बारे में डिस्कस करना पड़ेगा. सो दैट इज़ व्हाट द फोरकास्टिंग. फ्यूचर प्लान इट इज़ समथिंग लाइक. नेक्स्ट इज अ प्लानिंग. प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग. थिंकिंग बिफोर डूइंग. अभी जो भी काम करना है तो उसके पहले आप लोगों को सोचना पड़ेगा. थिंकिंग बिफोर डूइंग. बिफोर एक्चुअल वर्क इज स्टार्टेड, it is decided that what is to be produced, how much is to be produced, how to be produced, when to be produced and who are to be produced, it etc. So ऐसा प्लान करना चाहिए. सो आपस में आप लोग you put a question yourself, that is what the thinking. So automatically, so when you start questioning yourself, 100% you will get the answers for that. The planning should aim at eliminating the wastage of material, idleness of men, machinery and capital. If it is related to the industry, आप लोग कुछ करना चाहिए, कौन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किधर करना चाहिए, कितना क्वांटिटी करना चाहिए. सो सपोज इफ यू वांट टू स्टार्ट दैट, कितना वेस्टेज हम लोग एलिमिनेट कर सकता है. अगर मैं 10 आदमी से 5 आदमी को लिए तो, अगर ज़्यादा लिए तो आइडल मतलब काम एक खाली बैठ सकता है, एक आदमी काम करना पड़ेगा. सो दैट यू हैव टू थिंक. देन कितना मशीन चाहिए, देन कितना अमाउंट चाहिए. सो लाइक दैट यू हैव टू प्लान इट प्रॉपरली. सो दिस इज़ व्हाट. सो यू वांट टू डू इट थिंकिंग बिफोर डूइंग इट इज़. आपको जो भी काम करना पहला, बिफोर दैट पुट द सम क्वेश्चंस योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड द आंसर्स. Next, the function is organizing. When complete planning is done, next step is to arrange the men, money, machinery and material for actual execution of manufacturer. Organize करना पड़ेगा. प्लानिंग किया आप लोग. Once the planning is done, next step is arrange the कितना आदमी चाहिए, how much the money you required, how many machines are required and what type of material is required. उसको आप लोग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट द ऑर्गेनाइजिंग इट इज. नेक्स्ट फंक्शन इज अ स्टाफिंग. स्टाफिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिलेक्ट, ट्रेनिंग, प्रमोट एंड रिटायर देयर सबऑर्डिनेट्स. रिटायर देयर सबऑर्डिनेट्स, इसका मतलब क्या हो सकता है? ऑलरेडी यू आर रनिंग द इंडस्ट्रीज एंड यू वांट टू स्टार्ट द न्यू प्रोडक्ट. हु आर द कैपेबल ऑफ दैट, देन यू स्टार्ट रिटायरिंग देम and you select the proper managers and you train them. If there are some, you are going to recruit the some new people, you properly train them. So मतलब उसके लिए जो staff required है, so accordingly you have to process. How many managers you want, the managers, so what type of manager you want, and already the staffs are there, what type of training they need or some experience are available, you have to recruit it. So in that way you have to think. So this is the function of the management. So now is
start processing towards the staffing. So next is a leading. Leading is nothing but a direction. So direction देना पड़ेगा जो भी काम करते हैं. So you have to give the proper direction to those people, and you have to particular to that particular system, and automatically you will get the proper work done. It means the system of directing the plan to operation. डायरेक्टिंग द प्लान मतलब उसको भी प्लानिंग आया. अभी प्लानिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, थिंकिंग बिफोर डूइंग. सो आपके पास स्टाफ है, यू हैव अ सफिशिएंट स्टाफ, किसको कौन सा काम देना चाहिए. सो देयर अगेन यू हैव टू प्लान इट प्रॉपरली, यू हैव टू थिंक इट प्रॉपरली. द पर्सन हु डायरेक्ट्स मस्ट हैव डायनामिक लीडरशिप एंड मस्ट गाइड द सबऑर्डिनेट्स. जो भी डायरेक्शन देना रहता है, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, यू शुड हैव अ सफिशिएंट नॉलेज. दैट डायनामिक लीडरशिप मतलब क्या है, वो जो काम करने के लिए यू शुड हैव दैट सफिशिएंट नॉलेज. किसके पास नॉलेज रहता है, सो देन ओनली कैन डायरेक्ट द पीपल. अभी इवन इफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द टीचर्स आर डायरेक्ट द स्टूडेंट्स बिकॉज ही नोज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो आप लोगों को मालूम है अलग अलग स्टाफ अलग अलग सब्जेक्ट लेता है. हु इज टीचिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली इज डायरेक्ट हाउ टू गेट द मार्क्स एंड हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट. सो इवन इन द इंडस्ट्री ऑल्सो सेम थिंग. इफ दैट पर्सन इज knowledgeable, then only he will become a leader, then only he can show the direction to the people. The instruction must be simple, clear, complete and as far as possible in the writing. जो भी इंस्ट्रक्शन देता है इतना एम्बिगिटी नहीं होना चाहिए. हम लोग जो भी आप लोगों को समझाता है, सो यू शुड अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली. सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन इट इज. So next, that leading, in that leading only, so what does it mean actually? Leading is nothing but one type of leadership it is. All managers are supposed to have the quality of leadership as they are leaders of a concern. Already I told you that. Even one more thing I want to clear here, leader and a boss. Leader and a boss. Leader, इसका meaning क्या होता है? Leader, he will work together, he will work along with the subordinates. Boss, see only he will give the order, but leader he will not give the order, he is working with the people. Boss, he will give only the order. So leadership का मतलब क्या है, all the managers or the leaders actually are supposed to have the quality of leadership as they are leaders of concern. So next is a communication. This function transmit the information and instruction to all concerned parties. Concerned parties कौन कौन हो सकता है इधर, employees, customers, suppliers, shareholders and to general public also. कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, वो जो भी आप लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है सबको समझना चाहिए. Communication must include the acceptance of a good ideas coming from person who are direct in touch with the प्रैक्टिकल यूज़. कम्युनिकेशन अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अब मैं अभी आप लोगों को जो भी सिखा रहा हूँ आपको समझ में आया तो आई विल कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, अदरवाइज देर इज़ अ नो यूज़ ऑफ द कम्युनिकेशन हियर. मोटिवेशन. सपोज अ पर्सन इज हाईली कैपेबल, physically strong and technically qualified, but if he is not willing to work hard, his output will be much less. मोटिवेशन, एक आदमी, इवन आई एम द मैनेजर, ओके, आई एम हाईली कैपेबल बट फिजिकली स्ट्रांग एंड इवन आई एम टेक्निकली क्वालिफाइड. सपोज इफ आई एम नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू प्रॉपरली, आई एम नॉट गोइंग, कम्युनिकेशन से ही मोटिवेशन हो सकता है. मैं जो भी मैं बोलता हूँ आप लोग उससे मोटिवेट होना चाहिए. आउटपुट विल बी मच लेस. द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इज to find out the motives of a work in man, and he should be encouraged to do work by keeping his moral high. Unnecessary एक आदमी को टारगेट करना नहीं चाहिए. Impartially he has to work. Even the manager किधर भी काम करते रहता है, he should be impartial.
ये मेरा आदमी है, ये इसका ये अलग है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो देन ओनली he can motivate the people, otherwise there is a no use of the motivation. Next, supervision. Supervision is the process to ensure that the work is going on as per the plan established and that the workers are doing as they were desired to do. सुपरविजन का मतलब क्या है? देखने का. सिर्फ देखने का मतलब जो भी रॉन्ग होते रहता है या करेक्ट रहता है ऐसा नहीं है. इफ दे आर मूविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, सो यू हैव टू शो देम करेक्ट डायरेक्शन. इफ दे आर लैगिंग बिहाइंड द टारगेट, so you have to put the question, okay, if there is any problem, so you have to rectify it and you have to clear it. So that is what the supervision. सुपरविजन सुपरवाइजर रहता है हर एक इसमें इंडस्ट्री में. सिर्फ उसका काम देखने का नहीं है, कंप्लेंट करने का नहीं है, लेकिन व्हाट आर द देयर प्रॉब्लम्स he has to solve them, he have to rectify them. Okay, so that is what the actually the work of the supervision here. Next, coordinating. In an enterprise, there may be a large number of workers all engaged with the object of producing particular product. This is the task of coordination to integrate and harmonize them to achieve a common object. सो यूजुअली एक मेरे को ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? मेरे को एक फर्स्ट शिफ्ट में यूजुअली इंडस्ट्री में 3 शिफ्ट से चलाता है, 1 शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट. सो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, एक शिफ्ट में मेरे को 10 प्रोडक्ट बनाना है. फॉर एग्जांपल कैन टेक ऑफ 4 व्हीलर. सो एक शिफ्ट में मेरे को 10 कार बनाना है. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट, because within the one shift I have to produce the 10 number of products. so सभी का ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए. so तभी कैसा हो सकता है? बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दैट कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करने से so you can achieve your the common object over there. Next function is a controlling. It is the function of the management to see that other functions are being done perfectly all right. Controlling means to watch the actual performance with the plans and to point out the defective work to rectify them and prevent recurrence. That is what the quality control, cost control, material control and प्रोडक्शन कंट्रोल. ये सभी कंट्रोल होना चाहिए. इधर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए, मटेरियल कंट्रोल होना चाहिए, देन प्रोडक्शन कंट्रोल होना चाहिए. सो देन ओनली दिस इज व्हाट द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मतलब सिर्फ वो जो काम करते रहता है उसको देखने का नहीं रहता है, हर एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा. इधर क्या क्या कौन सा पॉइंट है? इन रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी, इन रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट, मटेरियल एंड इवन द प्रोडक्शन कंट्रोल, सभी को कंट्रोल करना चाहिए. इधर डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट द फंक्शन इज डिसीजन मेकिंग. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इट इज़. आप लोगों का आप लोग डिसीजन लाइफ में भी ले सकता है. एक रॉन्ग डिसीजन से आप लोगों का लाइफ खराब हो सकता है, और सो यू कैन अचीव समथिंग इन योर लाइफ ऑल्सो. इवन अभी मैं आजकल देख रहा हूँ डिसीजन, यू ऑल आर इन अ फाइनल ईयर बट you are not serious about your life because you are not able to take your decision of your life only. So आप लोग अभी समझ लो decision making when you join the industry, it is very important point. First you try to take the decision of your life, then only you can achieve the something in your life, otherwise it is very difficult. Decision making is the process by which a course of action is consciously chosen from available alternatives for the purpose of achieving the desired goals. ये आप लोगों का भी लाइफ में ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिसीजन. मेरे को अभी नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय स्टडी नाउ इटसेल्फ और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू टेक द डिसीजन नाउ ओनली इट इज़. सो इवन इंडस्ट्रीज ऑल्सो एक बार ऐसा प्रॉब्लम आता है,
वो मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है उसका ऊपर रहता है। सो इसका कॉन्शियस मतलब वो जो बोलते हैं ना पूरा होश में आपको बोलना पड़ेगा, दैट इज़ अ डिसीजन। So you have to think in future also. If my single decision, what will happen? So everything you have to analysis and study it. Then you take the proper decision. So इसलिए मैं once again I'll repeat it. So now you people are not serious about your academic. You take a decision uh, consciously. So for your life, not for others. Okay, so now if you start taking the decision proper for your life, then even if you want join industry, so 100% you will success in your life. Next, the topic is the planning. Planning is the process by which the course of action is consciously chosen from available alternatives for the purpose of achieving desired goals. So this is the function of the management only, but in detail we'll discuss it. What are the steps of planning? There are steps. You want to do the planning. Identification of the need for planning. First, क्या चाहिए? What are the, I can take an example of customers need क्या है? First you identify that, then you start planning. Establishing the objectives. ऑब्जेक्टिव क्या है? सो फर्स्ट एस्टैब्लिश करो उसको. बिल्डिंग द प्रीमाइसेस फॉर अ प्लानिंग. उसके लिए प्रॉपर प्रीमाइसेस बिल्ड करो. आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. ये कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? अभी आप लोग खेलते रहते हैं ऊपर. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ क्रिकेट ओनली. आप बॉलर है, वो बैट्समैन है. ओके, उसको आउट करने के लिए ओ मेरे को कैसा बॉलिंग करना चाहिए. हाउ आप लोग लॉन्ग ड्राइव, आई डोंट नो मच अबाउट द क्रिकेट. सो लेकिन उसमें प्लान करके आप लोग बॉलिंग करते हैं. दैट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन. इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट. ओके, उसको हराने के लिए. सो ऐसा ही अलग अलग वेज रहता है. सो इन व्हाट वे आई शुड गो, then I can achieve the desired things over here. Selecting the suitable course of action. So alternative find out करने के बाद there are a number of ways. कौन सा ways मेरे को select करना चाहिए, so that you select the proper course of action. Next, what are the objectives of planning? To meet the challenges of planning, to focus attention on obligation, to gain economical operation, to facilitate control, to meet the predetermined goals effectively and efficiently. So these are the main objectives for plannings. Next, what are the functions of planning now? Identification of need for planning. Identify क्या need है उसको identify करो. Establishing the mission and goals for the enterprises. यूजुअली मिशन का मतलब क्या है? दिस इज द एक्चुअल द वर्क यू हैव टू स्टार्ट. विजन एंड मिशन आप लोग सुना होगा. आपका विजन क्या चाहिए? मेरे को डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट करना चाहिए. मेरे को 3 साल में डिप्लोमा कंप्लीट करना है, तो मेरा मिशन क्या चाहिए? सो मेरे को कैसा करना चाहिए? सो एक्चुअल वर्क यू हैव टू डू इट. सो इसीलिए आप लोग, मैं क्या करने से मेरे को गोल रीच कर सकता हूँ. मैं गोल का मतलब आपका एक विजन है. हाँ, आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ द माय डिप्लोमा आई वांट टू डू माय यूजी, दैट इज़ अ डिग्री, दैट इज़ बी. मेरे को डिप्लोमा करने के बाद बी ज्वाइन करने के लिए एक अच्छा कॉलेज में मेरे को एडमिशन लेना चाहिए. उसके लिए आप लोग को क्या करना चाहिए? दैट इज़ व्हाट द मिशन, actually what you have to do. So that is you establish those missions and you can reach automatically your required goal. Forecasting future demand based on the facts and figures to build the premises for a planning. Forecasting मेरे को तो आपको को बताया, मेरे को मेरा 5 साल में मेरे को ऐसा होना चाहिए. फ्यूचर डिमांड, मेरे को इंजीनियर
डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली आई वांट टू ज्वाइन द जॉब. आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब इन अ गुड कंपनी विद इन अ 5 years मेरे को मेरा खुद का फ्लैट चाहिए, मेरे को खुद का मेरा गाड़ी चाहिए. ओके, सो उसका बारे में आप लोग फोरकास्ट करना पड़ेगा. वो हिसाब से आप लोग प्लानिंग करो. देन यू बिल्ड द प्रीमाइसेस. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. मेरे को वो मेरा गोल है आफ्टर 10 years मेरे को खुद का मेरा मकान होना चाहिए, मेरा खुद का गाड़ी होना चाहिए. हाँ, उसके लिए मैं कौन सा रास्ते में गए तो सो आई कैन रीच दैट गोल. सो लाइक दैट देर आर अ नंबर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन सो यू कैन फाइंड इट. सो फर्स्ट you identify these are the number of ways. Okay, so in which way I have to go, that is the next point. Evaluating the alternative course of action and selecting the suitable course of action. Okay, आप लोग हमारा कॉलेज से आपको को सिटी बस स्टैंड जाना चाहिए, सीबीटी जाना चाहिए. सीबीटी जाने के लिए सो आप लोग मिलिट्री महादेव मंदिर तक जा सकते हैं. उधर से रेलवे स्टेशन से भी जा सकते हैं या कॉलेज रोड से भी जा सकते हैं. Okay, so this is like that. These are the different ways to reach your goal. So which the way is suitable for me, that is what the course of action. So first you evaluate, then find the alternative course of action. मैं कॉलेज रोड से गए तो डिस्टेंस ज़्यादा होता है. अगर वाया मैं रेलवे स्टेशन से गए तो मेरे को नज़दीक पड़ता है. ओके, आपको नज़दीक पड़ता है, लेकिन द रोड, हाउ दैट रोड इज़. Then if I go via college road, how is the road? So that like that, so you have to evaluate them and which is the suitable for you, so you can take the action over there. To meet the challenges of changes and uncertainty. So मतलब आप लोग जाते रहते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है. सो ऐसा डिसाइड करना चाहिए आप लोग. सो टू मीट द चैलेंजेस वॉट एवर इट कम्स, जो भी चेंजेस होता है, अनसर्टेनिटी हो सकता है, सो इमीडिएटली सो यू आर एबल टू फेस देम. सो एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं. आप लोग मेरे को 5 मिनट में रेलवे स्टेशन जाना चाहिए, बीच में पुलिस एक पकड़ गया. सो ऑटोमेटिकली सो यू हैव टू थिंक in all respect. So I may face the problem, I may not face the problem. If that problem, if it comes, what should I do? I want to reach that particular goal. To minimize the cost of operation. So it is very important because related to the industry, the always we are think about the profit. Profit करने के लिए unnecessary, if you start investing unnecessary, if you start expenditure is more, so automatically so you may not get the profit. So for that you try to minimize the cost of operation to avoid the bottlenecks in the production, to bridge the gap between where we are and we want to be. हम लोग किधर है, मेरे को किधर जाना चाहिए, सो उसका बीच में जो भी प्रॉब्लम रहता है, वो जो गैप रहता है उसको build that bridge where I am and where I want to go. इसका बीच में प्रॉब्लम जो भी रहता है ना, उसको solution, you find out the solution, then you can reach your goal there. Then what are the advantages of planning? Planning gives the direction to achieve the objectives. Planning focuses attention on activities towards the attainment of our goals. ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन करके ही ये बता रहा हूँ मैं. सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस. इट हेल्प्स टू ऑफसेट चेंज एंड अनसर्टेनिटी. इट फैसिलिटेट गुड कंट्रोल फॉर द मैनेजर्स ओवर द सबऑर्डिनेट्स. इट हेल्प्स इन इकोनॉमिकल ऑपरेशंस. प्लानिंग अकाउंट्स फॉर अ ग्रोथ. अवॉइड बॉटलनेक्स इन द प्रोडक्शन. टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर we are and we want to be. So these are the main advantages. Even I'll suggest you that you want to do something, you should have a proper planning. Even in your life education, so for the 5th sem, so I want to make a distinction.
right? So you want to have that goal, so you want to get the distinction, so you plan it properly now only. Okay, so whatever you want to do, anything in your life, you want to be success, you should have a proper planning. Okay, so planning से so इतना सारा help हो सकता है. What are the disadvantages? Planning is a costly, it is the time consuming process. Of course, मेरे को एक गोल रीच करना पड़ेगा. थिंकिंग बिफोर एक्शन प्लानिंग इज एक्चुअली. सो मेरे 10 दिन सिर्फ मैं प्लानिंग करके चला गया. एक बार ऐसा हो सकता है 2 दिन का काम के लिए मेरे को 10 दिन प्लानिंग करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई सो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बट 10 दिन आप लोग वेस्ट किया तो 2 दिन में आपका काम होता है तो सो विल बी सक्सेस. समटाइम्स विदाउट अ प्लानिंग so you are going to face so many problems. It reduces initiative of employees, reluctance of a change, capital invested in fixed assets limits the planning, inaccuracy in the planning is affected by external limitations. So these are the main disadvantages of a planning. Next topic is organization. Organizing involves establishing an intentional structures of a role for people to fill in an organization. Intentional means to assign the task to the people who can do their best of the accomplishment of a enterprise goals. See, organization का मतलब क्या है? इंटेंशनल स्ट्रक्चर को आप लोगों को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर ऑफ अ रोल ऑफ पीपल. अभी आप लोग नाउ वी आर वर्किंग इन अ वन इंस्टीट्यूशन. सो दिस इज द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कौन कौन आदमी का क्या क्या रोल है. रोल फॉर अ पीपल टू फिल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अभी आप लोग ये ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं. देर इज अ प्रिंसिपल, देर आर HODs, there is a principal, there are HODs. Okay, then there is a administrator, then there is a top management, then after that the staff members, then instructors, then the attenders, right? So like that. So what organization? The role for people to fill an organization. Intentional means to assign the task. असाइन द टास्क मतलब जो भी काम रहता है, अलग अलग टास्क रहता है. सो दोज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट पीपल ओवर हियर. What are the steps involved? We want to make the organization. Identification and classification of the required activities. आइडेंटिफाई करो, क्लासीफाई करो. एक कॉलेज चालू कर रहा है या एक इंडस्ट्री चालू कर रहा है आप लोग. एक जनरल मैनेजर चाहिए, आप DGM चाहिए, देन मैनेजर चाहिए. मैनेजर का मतलब ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इन द इंडस्ट्री द नंबर ऑफ departments are there. With respect to that departments we have a different managers. Production manager, right? Maintenance manager, design manager. So like that. So identify that, then you classify them. क्या क्या एक्टिविटीज़ रहता है वो हिसाब से स्टाफिंग चाहिए आप लोगों को. ग्रुपिंग ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज़ टू अटेन द ऑब्जेक्टिव. ग्रुप करो कौन कौन सा एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू व्हाट डिपार्टमेंट. सो आप लोग ग्रुपिंग करो उसको, then you can attain your respective objectives. Assignment of manager to each group with necessary authority and responsibility of a supervisor. Already I told you that there are a number of departments are there. With respect to that department, so we have a different managers. So assign the managers, then you tell them their responsibility with respect to that department. What are his responsibility? Making provision for coordination horizontally and vertically in the organization structure. Horizontally then vertically then horizontally मतलब क्या है, एक मैनेजर रहता है. मेकिंग अ प्रोविजन मतलब आई एम द मैनेजर. ओके, सो वर्टिकल मतलब विद इन द शॉप फ्लोर. सो आई हैव टू टेक अ डिसीजन. देन हॉरिजॉन्टल मेरा हायर अथॉरिटी रहता है. सो लाइक दैट. सो यू मेक दम प्रोविजन प्रॉपरली. What are the principle of organization?
Consideration of objectives. Objectives decide the functions to be performed in the organization and have a direct bearing on the organization structure. Responsibility and authority. Authority means right to act, decide and command. सी हियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल मेरा ही ले सकता हूँ मैं. आई एम हेडिंग अ वन इंस्टीट्यूशन. राइट टू एक्ट वो देख के मैं डिसाइड लेना पड़ेगा, मतलब वो सिचुएशन में मैं कैसा एक्ट करना पड़ेगा. व्हाट हैज़ टू बी डिसाइड एंड व्हाट इज़ टू बी कमांड. मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ उधर. सो दैट मीन्स व्हाट, राइट टू एक्ट, डिसाइड एंड अ कमांड. दैट इज right of one man to require another man to do certain duties and obligations. एक आदमी डिसीजन लेके दूसरा आदमी उसको ठीक से करना पड़ेगा. मैनेजर जो भी बोलते रहता है उधर, ही हैज़ टू एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट डिसीजन सिचुएशन. वो एक्ट करके वो जो सिचुएशन रहता है, वो प्रॉब्लम रहता है, ही हैज़ टू डिसाइड एंड ही हैज़ टू कमांड. मतलब वो बोलना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए, ऐसा ही करो बराबर होता है करके. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. ये मेरा काम नहीं है आप ले लो, ऐसा नहीं बोल सकते. अभी आप लोग एग्जाम लिख रहे हैं, यू हैव टू टेक अ डिसीजन. यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. आपका स्टाफ नहीं हो सकता, आप पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते उधर. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैन दिस इज योर अथॉरिटी टू राइट द एग्जामिनेशन and your responsibility I have to pass that particular examination. Even in the industry also एक एक अलग अलग स्टाफ रहता है, उसका एक पोजीशन रहता है. ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल एंड ही इज़ द ऑथराइज पर्सन. अभी मेरा ही ले लो, आई एम द प्रिंसिपल, देन आई एम द रिस्पॉन्सिबल वट एवर मे बी द प्रॉब्लम. आई एम द ऑथराइज्ड, जो भी आता है आई हैव टू टेक अ डिसीजन ओवर देयर. देन स्पैन एंड कंट्रोल. स्पैन ऑफ कंट्रोल is a number of subordinates which are directly under their supervisors. This should be reasonable. An ideal number is a 4 and the lowest level is a 12 to 16. Thus manager may have a 4 deputy managers and a foreman may have a 16 workers. स्पैन एंड कंट्रोल का मतलब क्या है. एक इंडस्ट्री रहता है, एक मैनेजर जो भी रहता है उसका सबऑर्डिनेट में डेप्यूटी मैनेजर करके एक पोस्ट रहता है. ही कैन हैंडल 4 मेंबर्स, बियॉन्ड दैट ही मे नॉट हैंडल. हर एक शॉपर में एक फोरमैन रहता है, उसका अंदर सबऑर्डिनेट्स कितना 16 वर्कर्स दिए तो ही कैन मैनेज इट प्रॉपरली. इफ इट इज मोर, समटाइम्स इट मे बी आउट ऑफ कंट्रोल इट इज. So in that way you have to think over that. If there is a one manager, so manager he should have a 4 deputy managers and a foreman he can control the 16 workers here. Delegation is a process a manager follows in dividing the work assigned to him so that he can perform that part which is only he, because of his unique organizational placement, effectively, and so that he can get others to help him with that remains. डेलीगेशन ऑफ प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है. मैनेजर क्या करना पड़ेगा, इधर वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम. उसका जो काम रहता है, मैनेजर का काम बहुत सारा रहता है, वो कैसा डिसाइड करता है, कैसा डिवाइड करके किसको असाइन करता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑटोमेटिकली हियर द डिसीजन मेकिंग कम्स. किसको कौन सा काम करना चाहिए, 100% he has to divide the work and he has to assign for the different people here. Okay, so then only he can get others to help him with that remains. Otherwise it is very difficult to handle. In one term, delegation is nothing but it is a process. Manager, so he has to divide the work and he has to assign to him so that he can perform that part which is only he, because of his unique organizational placement effectively, and so that he can get others to help him with that remains.
Then guidelines for the good organization, allotment of work, giving the necessary authority, guidelines. अगर ये गाइडलाइंस फॉलो किए तो 100% ही विल बिकम अ गुड मैनेजर. ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकता है पर्टिकुलर मैनेजर. प्रोवाइडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू परमिट स्लाइट अल्टरनेटिव्स एंड एक्सपांशन वेन एवर रिक्वायर्ड. उसको एक परमिशन देना चाहिए, इतना रिस्ट्रिक्शन डालना नहीं चाहिए, बिकॉज इन सम सिचुएशन ओनली ही कैन अंडरस्टैंड, ही कैन make a slight alternatives and automatically he can get work it done. Proper distribution of work in the different departments, establishing the coordination among the different departments, eliminate the wastage of labor, materials and money and the machines hours. So these are the main important guidelines to build the good organization. आप लोग कैसा allotment work कर सकते हैं, and what is the necessary authority he can give. Then उसको थोड़ा flexibility होना चाहिए, slight alternative or whenever the expansion is required. Then properly work को distribution करना चाहिए अलग अलग department को. Coordination, already I told that the mutual understanding between all the departments or subordinates, everything it comes. Then try to eliminate the wastage of labor, material, money and machine hour. Okay, so with this we'll end the session. We will discuss in the next class, that is the types of organization. Okay, thank you.